ପିଲାମାନେ exactly I had some work at our hostel, as you know college and hostels are opening nowadays, and so I was just 10 minutes late. So little unit is there, छोटिया unit टा अच्छी पिले the doctor sword राव unit 2 अजी हमें पढ़ीबा तो हमें या पूर्वरु unit 1 the doctor sword राव unit 1 पढ़ी सारी छे एबे हमें will go for unit 2 of the doctor sword. So let's see what is there in the warm up section. Warm up section रे कौन अच्छी. So does the illness of a person dear to your heart upset you? Does the illness of a person dear to your heart upset you? तमरो माने जने अति प्रियर किए जड़ी बंधु से रोगग्रस्त होइछि तुमको दुख लगे कि? The question is there. Then second thing, can you guess how a doctor feels for his ailing friends? Good evening, Vijay. So can you guess how a doctor feels for his ailing friend? तार ailing friend माने ailing कहले असुस्थ तार असुस्थ बंधु मानक पई डॉक्टर को केमते लागुथबो? When a doctor treats his friends or relatives whenever they are in problem at that time, whatever the feeling inside a doctor. So let us see in this text, in this chapter, we'll see in this unit, we'll see that what is the feeling of a doctor whenever he treats his family, friends or relatives if somebody is ill here. जदि केतबेले तांको परिवार भितरु तांको बंधु भितरु जने असुस्थ होंती गोटे डाक्टर रो फीलिंग कौन हुए से विषय नहीं कि वर्तमान यूनिटा छोटिया यूनिटा विदिन 20 मिनिट्स आम सारी दबा 8टा भितर सारी दबा. ओके, गुड इवनिंग नरेश. Read the following unit of the text and note how Dr. Raman feels when he finds his bosom friends in a critical condition. bosom कहले क्लोज अंतरंग. तो इठी डॉक्टर रमन जेतेबेले तांकर बंधु माने रोगग्रस्त होइछि तांकर फीलिंग्स कोन होइछि से विषय रे हमें ए यूनिट रे पढिबा. सो लेट मी स्टार्ट. व्हाट हैपेंस टुडे स्टैंडिंग ओवर अ बेड. द फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, टुडे स्टैंडिंग ओवर अ बेड. आजि डाक्टर जेतेबेले माने निजे गोटे बेड पाखरे ठिया होइछंती, जने रोगीर बेड पाखरे ठिया होइछंती. द डॉक्टर फेल्ट डाक्टर निजे अनुभव करुले कौन? ही हिमसेल्फ नीडेड समवन टू टेल हिम सूथिंग लाइज. ही हिमसेल्फ नीडेड समवन टू टेल हिम सूथिंग लाइज. जे किए तांकु जड़े मिछ कथा कहता. गुड इवनिंग मकर ध्वज. सो तांकु सी आज माने भावुंट जे मते किए काश आसिक मते कहता मिछ कथा कहता जे तुम बंधु बंचीज से मिथ्यारे माने मते सांत्वना देता जे तुम बंधु बंचीज तुम बंधुर किसी हम ना. So I must have felt well. This is the thinking inside the doctor. He mopped his brow. Mopped कहले पोछिबा पिले MOPPED. Mopped कहले पोछिबा. Mopped his brow. Brow कहले भुल्लता हमर आखि पता जोटा अछि. He mopped his brow with his kerchief. Kerchief कहले रुमाल. Kerchief कहले रुमाल and sat down एवं बसी पड़िले. कोन कहले से तांकर माने आखि भुल्लता पोछि पड़ले पोछि पकेले से एवं से बसी पड़िले. माने he was just upset because his bosom friend was there on the bed. से बेड ऊपर किए थिला तांकर सबुठारु अंतरंग बंधु दुनिया सबुठारु अंतरंग बंधु सेठी थिला. So dearest friend in the world, Gopal, and beside the bed, the chair beside the bed, से चौकी रो पार्श्वरे जो बेड टा पड़ी थिला beside the bed, on the bed, से बेड ऊपर on the bed ले कहले पड़ी रहिथिला बिले. On the bed lay his dearest friend in the world. पृथ्वी रे तांकर सबुठार भल बंधु जी, to whom ever the doctor was thinking, one of his best friend was there. He was lying on the bed. से पड़ी थिला and his name was Gopal. Gopal पड़ी थिला. Yes or no? Gopal, they had known each other for 40 years now. And they had that friendship of 40 years. 40 वर्षर बंधुता. They had known each other. दुहे दुई जनंकु दीर्घ 40 वर्ष हेला जानिथिले. 40 years of friendship. Yes, Vijay. So 40 years of friendship was there. They had known each other for 40 years now, starting with their kindergarten days. And the friendship they had started, it was from which year? From their kindergarten. जहाँ को हमें KG बोली कहते हैं पहले LKG UKG कहते हैं इंग्लिश मीडियम पिला जो मैंने जानी थी वो लोअर किंडरगार्टन एंड अपर किंडरगार्टन. सो किंडरगार्टन दिन ठारू से माने बंधु दुई जन जाक बंधु को दिन ठारू किंडरगार्टन अप टू फ्रॉम देयर किंडरगार्टन डेज. 40 years of friendship. Yes, beta. They had known each other for 40 years, starting with their kindergarten days. They could not
of course meet as much as they wanted. Look at this. They could not of course meet as much as they wanted. Sentence ro construction ta dekha bile kete sundar mane first part then the third part then the second part. This is the 1 3 2 combination itare achi. So what happens, they could not of course meet as much as they wanted. Of course sambhavata mane probably se mane kon korthile no problem Lipisha ସେମାନେ ମାନେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟେଇଂ ଏପାର୍ଟ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ରାପ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ରାପ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍। ଏଠି ରାପ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ରଖିଲେ? ରାପ୍ଡ କହିଲେ ନର୍ମାଲି କଭର୍, ରାପ୍ଡ କହିଲେ ସିକ୍ରେଟ୍, ବଟ୍ ଏଠି ରାପ୍ କହିଲେ ବିଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ବୁଡ଼ିକି ରହିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ରାପ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ୍। ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ଅକେଜନାଲି କେବେ କେବେ ବାଇଚାନ୍ସ ଅକେଜନାଲି would happens on a Sunday, କୌଣସି ଏକ ରବିବାର ଦିନ on a Sunday ଗୋପାଲ would walk into the consulting room। ଗୋପାଲ କେଉଁଠିକି ଆସେ? would walk into the consulting room, ଡାକ୍ତରଙ୍କର କନସଲ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୃହ ଯେଉଁଟା ଥିବ से कंसल्टिंग रूम को से आसे। कहाँ कौन पाई? वाई ही केम देया टू मीट द डॉक्टर, डॉक्टर को देखा करिबा पाई। सो इनटू द कंसल्टिंग रूम एंड वेट पेशेंटली एंड ही वेट देया पेशेंटली, धैर्यर सहित। पेशेंट कहले धैर्य, सो पेशेंसली से वेट करे। कहाँ को अपेक्षा करे? डॉक्टरों को। ओके, वेट पेशेंटली इन ए खनर, गोटे कणरे बसिकी इन ए खनर till the doctor was free। डॉक्टर जो पर्यंत फ्री न होबे से पर्यंत गोपाल वो अति धैर्यर सहित डॉक्टर को अपेक्षा करे। एंड देन दे वुड डाइन टुगेदर। डाइन कहले खाइबा, डाइन शब्द रु डिनर शब्द सृष्टि होइछि डाइन। दे वुड डाइन टुगेदर, से माने एकाठी, टुगेदर कहले एकाठी, दे वुड डाइन टुगेदर से माने एकाठी को रेस्टोरेंट को जाइए खाइबे। दे वुड डाइन टुगेदर। सी ए पिक्चर, केबे केमती मूवी देखिबा पई जेबे। पिक्चर कहले मूवी पिले मूवी देखिबा पई जेबे। सी ए पिक्चर एंड टॉक ऑफ ईच अदर्स लाइफ एंड एक्टिविटीज एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट? ईच अदर्स लाइफ एंड एक्टिविटीज। निज दुई जनकर फैमिली विषय रे, तोर पुओ केमती अछि से कहबो तोर पुओ केमती अछि, बाबा माँ केमती अछंती। दिस इज व्हाट वी कॉल द फैमिली बिजनेस। नहीं, फैमिली विषय रे कथा हेबे एंड ईच अदर एक्टिविटीज। तोर प्रोफेशन केमती चली छी, तोर काम केते दूर प्रोग्रेस कला, तू कोन करछु। दिस इज व्हाट, दिस इज देयर एक्टिविटीज। इट वाज ए क्लासिक फ्रेंडशिप एंड दैट फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर एंड गोपाल, इट वाज ए क्लासिक फ्रेंडशिप। एक स्वतंत्र बंधुता थी से मन के भीतर, untouched by what it was a classic friendship standing over, untouched by changing times and circumstances, untouched by changing time and circumstances। circumstance कहले परिस्थिति, टाइम कहले समय, समय सहित माने परिस्थिति एवं समय सहित माने ताको स्पर्श करि पारि नाही, तांकर बंधुता को ग्रास करि पारि नाही, बंधुता को टच करि पारि नाही। माने एते समय बीती जाइछि, समय माने एते समय बीतला पर भी तांकर बंधुता केबे माने विच्छिन्न हो जाइनि, बंधुता तिक्ततार परिवर्तन हे नाही। माने परिस्थिति जहाँ भी परिस्थिति होइछि, दुई जण मिसिकी सामना करचंती, परिस्थिति रे पड़ी करी भी से माने अलगा है ना हमती। दे आर नॉट ए पार्ट विथ द सर्कमस्टेंसेस, देयर फ्रेंडशिप इज नॉट स्नैप्ड विथ द चेंजिंग टाइम। सो इट इज अनटच्ड and unaffected with the changing time and changing circumstances. So it was just why the poet has called it, the author has called it, it is what? It is a classic friendship, a friendship like Krishna and Sudama in the ancient story of India. Yes or no? And circumstances and activities. In his busy round of work, in his busy round of work, माने तांकर व्यस्त बहुल जीवनचर्या भितर, इन हिज बिजी राउंड ऑफ वर्क, डॉक्टर रमन हैड नॉट नोटिस्ड। आज माने से दिन कथा वर्तमान आसला, डॉक्टर रमन हैज नॉट नोटिस्ड। डॉक्टर रमन लक्ष्य करि पारि नाहंती, नोटिस करि पारि नाहंती कोन? दैट गोपाल हैड नॉट कॉल्ड इन विजिटेड, कॉल्ड इन कहले विजिट, कॉल्ड इन जेहेतु लागिछि ईडी लागिछि, इट इज विजिटेड, कॉल्ड इन, नॉट कॉल्ड इन ओवर 3 months नाउ। जे एते व्यस्त अछंती डॉक्टर जे दीर्घ 3 मास हला तांकर बंधु तांको पाखकु आसी नाही, से नोटिस करि पारि नाहंती।
Okay, so 3 months now he just remembered, just se mone pakele, he just remembered what it when he saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall. And whenever on that particular day when he saw Gopal's son sitting in a corner in the consulting hall, at that time he remembered that he had not met his bosom friend at least for 3 months. दीर्घ 3 मास है सी बंधु को देखी नहांती। कार मन पड़ा? डाक्तर मन पड़ा। कौन कौ कथा मन पड़ा? जे 3 मास है बंधु को देखी ना कि भाव मन पड़ा जिते तार पुओ को से देखिले, जिते से कार पुओ को देखिले, गोपाल पुओ को जो देखी निजर बंधु पुओ को जो देखी मन पड़ जाए आज की 3 मास है मोर बंधु को मु देखा करी पारी नहीं। He just remembered it when he saw Gopal's son sitting on a bench in the consulting hall one crowded morning. And the morning was very crowded. People were standing in line to meet the doctor. The doctor was very busy in his own business at that time. It was a busy schedule, busy day for the doctor. Yes or no? One crowded morning, Dr. Raman could not talk to him for over an hour. And Dr. Raman was not able to talk to his friend's son with Gopal's son for an hour. गोटे घंटा पर्यंत से ता सहित कथा हे पारिले नाही because he was busy. Why? So there might be a question why Dr. Raman did not talk with Gopal's son for an hour. So you can say he was busy in treating the patient. That's why he was not able to talk with Gopal's son. Yes or no? This is a question. Dr. Raman could not talk to him for over an hour when he got up and was about to pass into the operation room. When he got up, se jete bele uthile, when he got up and was about to pass, jiba pai baharile, pass kariba pai baharile, karan consulting room pass hai ki tango operation theater ko jibar tha. तो से जिते बड़े तंकर चैम्बर भितर बाहरी के कंसल्टिंग हॉल देखी जाउछंती ऑपरेशन हॉल को एट दैट टाइम ही हैड मार्क्ड सेते बड़े से मार्क करचंती काकू टू गोपाल सन गोपाल रो पुओ को से मार्क करिचंती was about to pass into operation room he called off the young man call off कहले डाकिबा call off कहले डाकिबा एठी called off कहले डाकिले called off the young man and asked डके पठेले and asked एवं ताको पचारिले काकू पचारिले गोपाल सन व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सा तुम कौन पाए ठीक आइच व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सा द यूथ वाज नर्वस एंड साय पिलाटी नर्वस थिला एवं लाजौ थिला मध्य लाज करूथिला द यूथ वाज नर्वस एंड साय एंड ही रिप्लाइड द यूथ रिप्लाइड मदर सेंट मी हियर माय मदर सेंट मी हियर मो मां मते एठी पठेले किए कहला हु टोल्ड दिस गोपाल सन काकू टू द डॉक्टर व्हाई व्हेन द डॉक्टर आस्क्ड व्हाट डिड द डॉक्टर आस्क व्हाट ब्रिंग्स हिम देयर सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू द डॉक्टर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू मु तुम पे कोन करि परिबी हाउ कैन आई हेल्प यू व्हाट कैन आई डू फॉर यू देन द सन रिप्लाइड साइली व्हाट डिड ही से फादर इज इल मो बाबा असुस्थ अछंती बोली किए कहला पिले या गोपाल सन टोल्ड गोपाल सन कहला तो एटा थिला प्रच्छद पटर जे माने ए थ्रू रे ए स्टोरी घटिला परे डॉक्टर आसिकी माने कहार ट्रीटमेंट करूचंती माने गोपाल रो ट्रीटमेंट करूचंती तो बाकी जिनस आमर से जे ठिया आइचंती तंकर माने सब कथा हमें पढ़ी सारी सो दिस इज व्हाट वी कॉल द यूनिट 2 पिले एटा थिला तमर यूनिट 2 तो दुईटा क्वेश्चन अच्छी दुईटा क्वेश्चन आम आलोचना करवा प्रश्न दुईटा अच्छी हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिज फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर रमन एंड गोपाल हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर रमन एंड गोपाल राइटर डॉक्टर रमन और गोपाल फ्रेंडशिप को किभली वर्णना करिसंते यस और नो सो वी आर टू राइट द आंसर लाइक दिस द राइटर डिस्क्राइब्स द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर and Dr. Raman and Gopal as a classic friendship which was untouched with the changing circumstances and changing time. And the friendship was of 40 years from their kindergarten days. Yes or no? Though they wanted to meet
as much as possible, but it was not possible due to both are busy in their family business and they are wrapped up in their own profession and activities. So this is what we call the answer of question number 1. Okay. Question number 2. What is question number 2? How did Dr. Raman come to know about Gopal's illness? This is the question. Question number 2 is there. How did Dr. Raman come to know about Gopal's illness? पिला माने question केमिति लिखिबा main जिनस मन रखिबा whenever we are answering a question, we are plus 2 students, so we must take the one part of the question and another part must be answered. So like this, how did Dr. Raman come to know? Dr. Raman came to know. We have to write, it is in past tense, so we have to write in past tense. Dr. Raman came to know about Gopal's illness. Gopal's illness from Gopal's son. Okay, this is the answer. Thereafter, we will go for narrating another part. Okay, like this, that one crowded morning, when the doctor was about to pass his consulting room and he was going to do an operation, he saw Gopal's son. At that time, he remembered that he had not met his friend for over 3 months of time, and he asked Gopal's son, why did he come there? And Gopal's son replied that his mother had sent him and his father was ill. This is the process by which the doctor came to know about his friend's illness. So that's all for the day. Yes, 3 marks of question. এই দুইটা নম্বর থিলা আর গোটে প্যারাগ্রাফ আমি সরি গলে পিলে एक्चुअली मोर हॉस्टेल रे किसी काम थिला आज कॉलेज रे किसी काम थिला सेति में लेट रे स्टार्ट हला तो आसंता काली 3टा बेले आमे इकोनॉमिक्स जो चली इकोनॉमिक्स रो लास्ट पार्ट फर्स्ट यूनिट रो लास्ट पार्ट पढ़िबा आउ यार माने यूनिट 3 टा संध्या बेले करबा सो सी यू देयर बाय बाय गुड नाइट टेक केयर थैंक यू।